This is Just Broadcasting, and you're watching Just Punjabi. Ladies and gentlemen, welcome to Harry ke Sath. This is your host Harry Malhotra. साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ, ਦੁਆ। ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰਾਤ ਹੈਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਫਰਾਈਡੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ time and obligations. होना तो एक रात हैरी के साथ चाहिए. No, Penny ji doesn't like that. But tonight I have a very dear, I would say very dear friend, a great artist who has come through a lot and who has made accomplishments that very hard to achieve. कहते हैं ना कि कुछ लोग बहाने कर देंगे ने, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ये है मुसीबत, वो है मुसीबत, फिर कुछ होंगे ने साढ़े और इन्हों वर्गे थोड़े जे दीवाने जो कहते हैं कि है तो है। हमेशा मेरी फेवरेट लाइन रही है कि खुदा जो है, डायरैक्टर जो है, सब तो डिफिकल्ट रोल एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को दिंदा है, तो खुदा जो है, रब जो है, वो भी उन्होंने ही चुनता है कि जेडे कि इम्तिहान पास कर सकते हैं। जब तुम प्रे करते हो कि मैनू गिव मी स्ट्रेंथ, तो वो स्ट्रेंथ नहीं दिंदा, वो इम्तिहान दिंदा है। जब तुम कहते हो मैनू सक्सैसफुल बनाओ, वो फिर इम्तिहान दिंदा है। जेड़ा कोई वो इम्तिहान पास कर सकता है, क्योंकि उन्हें भी तो टेस्ट करना है ना यार। अगर आप $1 मिलियन मांगो, ऐसे $1 मिलियन मिल जाए तो असी सारे पागल हो जाइए। जस्ट इमेजिन, क्योंकि न्यूयॉर्क लॉटरी इज right now very high. But tonight I have a very dear friend who I lovingly call Kiddo, which I'm not supposed to, but I love him so much because I've known him for almost 10-12 years from the days of Har Raat Harry Ke Saath. Kindly welcome Jakpreet Bajwa, a great singer, a great talented artist, all the way from Canada, here live with us tonight. Jakpreet, how are you? Sat Sri Akal. Sat Sri Akal, Paji. It's so great to be here. Sab to pehla sare viewers nu mere valon pyar bhari Sat Sri Akal. Thank you. I'm so excited to be here, and what a time to do the show. 10 p.m. represent New York. No sleeping, right? I love it. अच्छा मैनू आ दसो, क्योंकि यूजली मैं आप गल कर रहे थे कि मैं रिसर्च जरूर करता हूँ और मैं रिसर्च थोड़े उत्ते भी की है। कोई आर्टिस्ट आवे, प्रोड्यूसर आवे, डायरैक्टर आवे, एक्टर आवे, सिंगर आवे, मैं यूजली मेरी रिसर्च होंगी 8 तो 10 घंटे की। फिर मेरे फोन कॉल्स आते हैं जान पहचान वाले बंदियां वड्डियां कि भैया बताओ कुछ ऐसी कुंडी बताओ जो सरप्राइज़ हो, ताकि मजाकिया भी हो जाए, क्योंकि आई डोंट डू कंट्रोवर्सी। पर यू बिल आई डोंट डू हो जाए तो हो जाए, पर वो मेरे हाथ नहीं है। बट लेट मी आस्क यू समथिंग, कद लग्या कि हाँ मैं गा सकता वहाँ, हाँ मैनू आई परस्यू करना चाहिए है? क्योंकि कई बार होंगे ना कि जब घरे कहिए कि हाँ जी मैं आ करना है, कहते नहीं बेटा तुम पढ़ लिख लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या कुछ ना कुछ यहो जिहा एक हुनर हाथ दे विच रखो कि हाँ कोशिश कर लो, जे फेल हो जाओ तो फिर जाके जॉब और इंश्योरेंस तुहाडी होवे। सर मैनू हजे भी लगता कि मैं गा नहीं सकता। ना Honestly, it's all been everyone's support. Music मेरे लिए एक avenue सीगा, क्योंकि just to give people background, जब मैं 6 महीने दा सीगा मैंने कैंसर हो गया सीगा जी, and it was eye cancer, so both of my eyes had to be removed. So since then I've been totally blind. Because I'm sure people are asking why is this guy wearing glasses inside, right? लोकी दे पुछदे होंदे ने, और मैनू नहीं लगदा that you cannot see, because थोड़ी जो बहुत इंटरेक्शन हुई है, I think you see everything very fine. No, that's देखो सारियां दी ज़रा नवाज़ी है, but I just knew from a very very young age that music was always so therapeutic for me. मेरे मन दे विच, दिल दे विच music was there, and I think I guess the parents had always seen that right from the beginning, and that's how I got into training, and by God's grace my first stage show was at the age of 6, and since then there's been no looking back. तो फिर ट्रेनिंग किदे कोलों लेती? मैं मेरी जेह्ड़े पहले गुरुजी हैगे ने, he's still my guruji to this day, उस्ताद दविंदर हुंडल जी, वो भी वैनकूवर कनाडा तो हैगे ने, and he's also blind actually. So
we understood each other right away, you know, in terms of perfect pitch, in terms of music. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ you know, people like Ustad Maqbool Hussain Khan Sahab, who is the late Ustad Rashid Khan Sahab's brother. And so I've been very fortunate to learn from many, many gurus. ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੌਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਮਥਾਲੇਬੂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, because I know you're from Canada, they speak a lot of French over there, and then you mix and match, you know, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਆ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਾ ਰੇ ਤੋਂ ਦੀ ਮੀ ਫਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਧਾ ਨੀਸਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ ਮਗਰ ਪਿਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, you know, ਜੋ it's like a little bit of a level high. Not that I'm a very knowledgeable person when it comes to music. I'm a student, so I'm always curious. So how do you mix, you know, ਜਿਵੇਂ DJ ਤੇ remix ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ DJ ਜੋ ਹੈ remix ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ I've remained a DJ in my past life. So how do you do this? Tell me about that. I think that's a very, very good question, and I'll try to answer it the best way I can. I think the biggest thing, Paji, is that I grew up in a household with so much music. Like Father Sahab, the Mummy ji, like obviously they've listened to the old time classics, you know, Rafi Sahab too, and then obviously back then it was Udit Narayan ji and Kumar Sanu Da, and you know, we've grown up with so much music. My brother, I was obviously, you know, into the Backstreet Boys, 50 Cent, Kanye West. And then Ashika and I would just listen to anything that we would listen to, my sister and I. So I think at the end of the day, I think that really helped. Growing up in a very multicultural part of the country. And, you know, our country, you know, US and Canada is very multicultural. So I think that just really helped mix things in. And then I did my Western classical music diploma, and I learned, and I'm still learning, obviously, R&B and pop and stuff. So I think that just really helped a lot. And then the basic ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ Indian classical music ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓ, then you can sing anything. Yes. So ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, the safest country in the world, ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Well, I mean, maybe with me though. So. Oh no, come on. He's got a sense of humor, ladies and gentlemen. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ Instagram ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, you know, ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ, ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? Yeah, no, absolutely. ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? No, we've done some projects together, and hopefully more in the future. She has her own solo career as well. Her name is Justine, and we've had like a brother and sister relationship. So one of the knowledge yeah. I know. Oh no, मैं आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा सर. पाजी ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ breaking news, right? Breaking news. ਹੁਣੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ. No. We actually got to know each other through a mutual friend, and we're into the same sport, hockey, and nice. Into the same music as well. So she would start making beats, we would start jamming, and we're like, you know, why don't we start doing something with this? And she's also blind, so okay, we don't have to stress that. No. She's a nice girl. Stress on the girl. और हर कुड़ी ਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਾ ਪਾਓ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਬਹਿਨ ਬਣਾਏਗਾ तो यू नो, फिर मैंने बोला ओह, फिर सर हमने शुरुआत की प्यार बांटने की. आप भी प्यार बांटो. अच्छा, ਬਹਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ. ਅੱਛਾ, you said hockey. ਜੀ. ਹੁਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਐਸ਼ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ. ਲਿਟਰਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਿ ਕੱਲ, ਯੂ ਨੋ, ਇਨ ਮਾਈ ਆਫਿਸ I have a very experienced gentleman who's much more senior than me, and he loves ice hockey. Hockey, part of it.
And he goes, oh, you know, I was at the Canucks game. I flew over there. And right now, I met Jagpreet after many years. Actually, this is the first time we're meeting. Jagpreet has sung national anthem for Canucks. Ji, ji. Yeah. Honestly, Baji, it was it was always a dream. Like, I always pictured myself singing. I was always a Canucks fan growing up. Still am, obviously. And really what happened was they saw me on Instagram because I like during the COVID time, during lockdown, and they saw like covers of me on Instagram. My buddy had put my name forward, and they had seen my covers and stuff, and they really enjoyed it, and so they had invited me. They're like, "Tusi aake Vaisakhi te sada game night hega, tusi aake utte perform karo." Us time lockdown chal raha siga, so it was just me in an empty building and the players, and so. It was so surreal, Paji, because when I anthem khatam kita siga, I went online on social media and stuff, and I was just gonna write, you know, I really enjoyed that. This was a dream come true. And I saw like the national media, everyone was retweeting the anthems and talking about the anthems. I'm like, wow, I wasn't expecting that at all, right? So, and I've been singing there quite a bit ever since. अच्छा जेड़ा पहला गाना रिकॉर्ड किया सी ओदा एक्सपीरियंस मैनू दसो लाइक प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग इन अ स्टूडियो यू नो लाइक ठीक है कि 6 साल दे सीगे पहली स्टेज परफॉर्मेंस हो गई मगर जब स्टूडियो दे विच जाईदा ते एक अलग एक्सपीरियंस हुंदा जी जी ओ एक्सपीरियंस बारे मैनू दसो the biggest experience I think Paji, I mean I've been doing it since I was very young but I think the very biggest experience for me that was like you know this is my sort of song was when I did my very first single Dil Vich. That song I recorded with a friend of mine, and that was like my very first time in studio. And then I would say like after that, going to Mumbai and singing for Shekhar Sarinji's film Chicken Kadhi Law, which had Ashutosh Rana ji in the film as well. So that was my other experience that I really enjoyed. पर वो एक्सपीरियंस किवें सीगा क्या वो ट्रैक्स दे उत्ते सीगा क्योंकि यू नो देयर लाइक 8 ट्रैक्स 16 ट्रैक्स एक बीट वजदी है आजकल तो काफी जिवें AR रहमान I've been to his recording studio you don't even realize what song have you sung for I know जब तक वो गाना रिलीज नहीं हुंदा exactly yeah no I mean it wasn't you know I've been very fortunate that way it wasn't really like that with me you know in terms of I knew that it would be coming out in that movie, that kind of thing. So, I mean, the experience was really good because I think, you know, singing in a recording studio versus singing live, they're completely different things, right? Because singing live, you're obviously having to interact with the audience, and there's a lot that goes into it. How do you keep the audience involved? In a recording studio, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ tone hai tusi kis tarah tusi istemal karde ho so like for me that was always like super important and those are experiences that I've always carried forward. Well, ladies and gentlemen, we're going to continue talking to Jagpreet Bajwa 718-786-5221 and I'll try to pick up your calls but time for a short commercial break. I do have to sare jehde sponsors hege ne ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਫੀ ਹੈਪੀ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰੀਜ਼ ਡੇ ਚੀਅਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ This is Just Broadcasting and you're watching Just Punjabi. ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਏ ਟੈਕਸਸ ਆਰ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜੋ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਫੰਡ ਦਵਾ ਸਕੇ ਗਿਵ ਯੂਰ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੂ ਮੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਂਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਸੈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ $75 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ
सारा फर्नीचर ओन कर सकते हो 72 महीने 0 डाउन पेमेंट दे 0 इंटरेस्ट रेट Furnitureland Bakersfield, inspirational for your home. Hi, I'm Seema from Mumbai. कई शादियां 60-70% में होती है, कभी-कभी 0% में भी होती है। आरके ज्वेल्स स्लिंग में होता है 100% मैच, बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। For dental treatment, visit Dental Office, Hillside Avenue, Jamaica, New York. Sandcastle, best indoor and outdoor wedding venue in Long Island. Over 30 years of experience in hosting successful weddings. An exclusive and luxurious wedding setting. Award-winning wedding hall venue and cuisine. Sandcastle, following tradition. 505 Franklin Avenue, Franklin Square, New York. Call 516-354-7263. Mention JUS TV when booking for a free Rolls-Royce ride. Global Multi-Services Stockton, a home of all trucking services. ਜੋ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਟਰੱਕ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ Global Multi-Services Stockton. Call 209-982-9996. My name is Attorney Anuj Sharma from a Sharma Law Firm, where your success is our only mission. चाहे वो asylum होवे, cancellation removal होवे, deportation defense होवे, U visa होवे, और corporate immigration, H1, L1, foreign green card, or investor visa. We specialize in all parts of immigration law, so this is your one-stop shop for your all immigration needs. This is a law firm by the community for the community. Build the pool yourself. What could go wrong? Some things are better left to a professional. It dried so fast. Like when it comes to finding financial advisors. Mom! So leave it to Smart Asset to find them for you. Take the free quiz at smartasset.com. Then you'll be matched with up to 3 vetted fiduciary financial advisors. To get started, take the Advisor Match quiz now at smartasset.com. Terrific! Orders आने तक हमें negotiate करना होगा। Negotiate करना तो किसी ने सिखाया नहीं भाई। आज ना तुम रहोगे, ना तुम्हारा देश। अगर एक बार फिर इन आतंकवादी को जीतने दिया, सारे फिर से हमला करेंगे। This is JUS Broadcasting, and you're watching JUS Punjabi. Ladies and gentlemen, welcome back. Maafi chahna, well, I have to do what I have to do. Break lani pendi hai. Kuch comments aaye ne. Ek comment bada weird ja hai. Mainu karna chahiye tha. Hi Harry, why are you exposing your chest? Teri. Oye, 70 degree hai New York de vich. Are you joking right now? And then Sunita and Sunita from Surrey, right? Surrey, Canada. And Ajit Singh from California want you to sing this song. But before I ask Jakpreet to sing this song, I want to know the story behind it. Zarur ji request karanga ke Jakpreet sade vaste aa gana gaan. Te nawa gana release hoya. Chest? Seriously? Surma. You just released a new song, Surma. जी. अच्छा अपनी गल होंदी पई सी गाने अपने आप चूज करदे हो आपे लिखदे हो कौन हेल्प करदा है हर एक प्रोसेस ते डिपेंड करदा है हुन जेड़ा सुरमा जेड़ा आया सी गाना आई कंपोज दैट मेलोडी एंड देन मैं डैडी जी कोल गया सीगा सो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स 90% ता डैडी जी लिखते ने सो डैडी जी नु मैं मेलोडी सुनाया सी फिर उन्हां ने उस बेसिस ते लिखया सीगा we wanted it to be you know romantic and you know fun अच्छा मैं जद भी किसी सिंगर दे नाल खास करके कंपोजर या आर्टिस्ट दे नाल बनना मैं हमेशा गल पुछदा हुन्ना कि ट्यून पहला के वर्डिंग पहला
I've done many ways. मैनू actually कोई preference नहीं हैगा क्योंकि कदे-कदे melody भी आ जाती है brain च कदे-कदे wording आ जाता पहले कदे-कदे कुछ भी नहीं आंदा मगर सब तो easy process easy तो खैर कुछ भी नहीं होता मगर सब तो जो comfortable process है वो केड़ा होता है कि धुन आ गई फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ words ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ words ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਧੁਨ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ honestly ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ difficult महसूस नहीं होया क्योंकि like I feel like everything is challenging in its own way, right? जे पहले एक composition तुसी बनाती उस तो बाद फिर meter च words नू मतलब how you put the words in and then it has to make sense, right? So and the other way too, if you have the words first, is like okay, दा हुन धुन मैं किस तरह बनावा? And most of the time as musicians, you have your ideas at night. And so at night sometimes मैं उठ के फिर मैं practice करता composition दी and then I get a call from like Ashika or like my dad, yo, can you turn that down, bro? No, seriously, I 100% agree. मैं ना अपने like bedside ते किताब और पेन रखा होता है all of a sudden 2, 2:30, 3 बजे पता नहीं की होता है I know and मैनू मेरे घर वाले भी पूछते ने in fact Penny जी भी कहते क्या होता है तुझे मैं पता नहीं होता मगर वो idea आ जाता है फिर वो लिख लेता है That's when most of the hit songs were written, actually, if you think about it, right? Tum Hi Ho was written that way. Yeah. Even if you look at Max Martin, jede hitmaker ne Hollywood de vich pop songs, they matlab Backstreet Boys to leke aaj tak. All of his hit songs, you know, they've come in the wee hours of the morning, right? I want it that way. Yeah, 2:30 a.m. I honestly like मैनू भी ना कोई show da idea आ जाएगा या stand up comedy da joke आ जाएगा या कुछ notice कीता है all of a sudden and I don't know and I'm a very deep sleeper like I like my 8 hours of sleep because I don't believe in those nonsense influencers के 4 घंटे सो फिर इस पहाड़ी पे चढ़ जाओ फिर उस पहाड़ी पे चढ़ जाओ फिर उस पहाड़ी पे चढ़ जाओ वहाँ पे महादेव मिल जाएंगे मैं पहाड़ियाँ ही चढ़ते रहो ते उतरोगे कदों but it's like something happens in like 2:30 3 4 like something happens तो मैंने जब तुसी आ दस्या कि डैडी जी जो है 90% गाने लिखते हैं जी कॉपीराइट दे पैसे दिंदे हो कि नहीं दिंदे हो सारा कुछ भाई ਉੱਥੇ बैठे ना मैं पूछ लांगा नहीं वो तो मैं झूठ नहीं बोलता सारा मैनेज फाइनेंसर मैनेजर सारा कुछ है कि नहीं साढ़े फादर साहब and that is a very good thing नाल sister भी है कि नहीं she's very sweet and brother भी है कि नहीं very very nice do you remember the time when you used to call Har Raat Hari Ke Saath and sing oh of course how can I forget how long we ago? even put some of those on YouTube you did yeah oh I haven't seen that I need to see it because you know they're up there. We were busy all day and this and that and I called Penny ji just before coming to the studio and I'm like watch tonight's show I'm like it's Jakpreet Bajwa I'm like this kid used to call and sing and I'm like he's become such a wonderful artist thank you sir how did that transform or how did that like I know you've been singing since you were 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਕਨਕਸ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ I think in terms of change like ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ as an artist as a human being fan following you know people screaming your name when you're performing I would say I mean it's very humbling to get all the love and support from people as a human being I haven't really changed much like I've been so grateful कि ਜਿਹੜੇ family ने ना प्यार दिता ना support दिता उन्होंने नाल भी मैनू like they've always kept me grounded and I think because of that I've always been grounded like मैनू ਇਹ कदी नहीं होया कि like ਹੁਣ मैं बहुत बड़ा star बन गया या you know I've reached this pinnacle I'm always saying like ਜੇ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆ then that means I gotta even do better and better and better and I keep challenging myself ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ you know ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਜੱਫੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ No, I mean, you know, like, I love everybody. It doesn't matter. I love everybody too, brother. You know, I'm a MBBS
मियाँ बीवी बच्चों के साथ चलो भाई. मियाँ बीवी बच्चों के साथ. Married but bachelor available. But how does that feel? Like, does it ever go like, oh yes, I made it? No, because I feel like in this music industry you can never feel like you've made it. Because I feel like, you know, at the end of the day, you're always looking to reach somewhere. You're always looking for, not because of greed or anything like that, but jede loki thwade kol aande a mainu eh nahi hoya ki oh like, yeah man, oh my gosh, it's like girls screaming, like I don't know, I've just been that way. I par changa te lagda hai na bhai, yes, I've achieved something. I mean, yeah, I mean, you're happy about what you do and everything that you've been able to accomplish, but I think that the moment you start feeling like, haan, main ithe hun pahunch gaya, you know, then that's when things are not what they seem anymore, right? Acha, before we go to another break, Sunita from Surrey and Ajit Singh from California, और जिन्हों ने आ कंप्लेंट की थी कि मैं चेस्ट एक्सपोज कर रहा हूँ, सुरमा सॉन्ग दिया अगर कुछ लाइनें हो जाएं प्लीज. ब्यूटीफुल फोटोआं तेरियां कमरे च मैं लाइयां, तेरी स्माइल नी पावरफुल नी लोकी देण बधाइयां. ब्यूटीफुल फोटोआं तेरियां कमरे च मैं लाइयां, तेरी स्माइल नी पावरफुल नी लोकी देण बधाइयां. हॉलिडे मनाइए अपा चल चलिए, फैन हो गया मैं ते तेरा बलिए, विआह दा सूट हुण तेरा लभिए, रातां चानणियां सुरमा पाके अखां मिला के, दिल दी कह गई तू तेरी यादावां देण सजावां, किथे हुण रह गई तू सुरमा पाके अखां मिला के, दिल दी कह गई तू तेरी यादावां देण सजावां, हाय किथे हुण रह गई तू. Yeah, I've been looking at your photos every single day, I wanna fly you out, I love you in every way, so tell me what you're dreaming, thinking about, cause I can't wait any longer. Nice. Thank you. अच्छा, ये लाइनां ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ. नहीं इंग्लिश पार्ट नहीं, मैं पंजाबी. जरा पहली लाइन दोबारा गायो कि सुरमा पा के किथे रह गई है. सुरमा पा के अखां मिला के, दिल दी कह गई तू तेरी यादावां देण सजावां, किथे हुण रह गई तू. सर मतलब आपसे बड़ा आशिक नहीं देखा सर. सुरमा पा के आए हाय हाय हाय. सर मेरी मेरी अगली जो है जिन्नी भी फेसबुक और ट्विटर और वगैरह की पोस्टिंग होएगी ना, मैं तो रिक्वेस्ट करेंगा नेक्स्ट टाइम तो जो भी तुम सुनोगे इट विल बी मिस्टर बाजवा. वेरी नाइस वर्डिंग्स, वेरी नाइस वर्डिंग्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. व्हेन वी कम बैक वी विल शो यू द न्यू रिलीज सॉन्ग सुरमा फ्रॉम जगप्रीत बाजवा. और जिन्हें होर कमेंट्स आ रहे ने, we'll come back and talk about this. This is Just Broadcasting, and you're watching Just Punjabi. Just Punjabi, हक सच अते आवाम दी आवाज़. ट्रांसपोर्टेशन दी वेल रेनाउंड कंपनी है लेजेंड ट्रांसपोर्टेशन इनकॉर्पोरेटेड. खूबसूरत गहने, दिलकश डिजाइन्स, मॉडर्न ते ट्रेडिशनल ज्वेलरी दी परमार. चीना ज्वेलर्स हर तरह दी बाय कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी ते गोल्ड कॉइन्स खरीदन लई आज आओ चीना ज्वेलर्स, स्टॉकटन बुलेवार्ड, स्वीट ए, सैक्रामेंटो. पुराने गहने वटा के नवे गहने खरीदन ते पाओ खास ऑफर. फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉल 9169563094.
न्यू इंडियन सुपरमार्केट ट्रेसी ने खोल दिता है दुआबा स्वीट्स ट्रेसी, जिथे हर तरह दा वेजी स्वादी खाना, देसी घ्यो दियां मिठाइयां, दालां ते सब्जियां, एगलेस केक एंड स्पेशल वेजी सोया चांप हर समय तैयार मिलदे ने। छोटे ते वड्डे फंक्शनां लई हर तरह दी केटरिंग लई जरूर पहुंचो। हर तरह दी ग्रोसरी, ताजा फल, सब्जियां, फ्रोजन फूड, क्रोकरी, बेकरी ते घर बर्तन वाला सारा सामान, वीकेंड ते स्पेशल सेल, सारा कुछ इक्को छत थल्ले। न्यू इंडियन सुपरमार्केट ट्रेसी ते दुआबा स्वीट्स ट्रेसी। फॉर मोर information call। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। Keep watching Just Punjabi. Keep watching Just Punjabi. Keep watching Just Punjabi. हीरे आखती जोगिया झूठे बोले, वॉच किस्से कहानियां every Monday 9:30 PM EST only on channel Just Punjabi। बड़ा ही खतरनाक वे दसदा मैं फुफड़ थोनू। मन्निया फुफड़ा तेरा वैंजो वर्गा मुंह आ। हुण हੱਸਣ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੰਡ ਰੱਖ ਠੰਡ। ਠੀਕ ਦੇ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੜਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੰਡ ਰੱਖ ਠੰਡ every Tuesday and Wednesday 9:30 PM EST only on channel Just Punjabi। बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सनोरीता। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, माँ ने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो। सब कुछ छुट सकता है पर एक चीज नहीं छड़ सकती, वो है एक्टिंग, नौटंकी ते ड्रामेबाजी। क्योंकि मेरे विच सब फिल्मी सब फिल्मी है। मंडे टू फ्राइडे 11:30 AM EST ओनली ऑन चैनल जस्ट पंजाबी। देश दुनिया दी पॉलिटिक्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल खबरां, मुद्दियां नूं जानन लई ते समझण लई जुड़ो 90 मिनट्स जस्ट दे नाल एवरी डे 8 PM to 9:30 PM। 90 minutes news and views, prime time 8 PM daily, to the point 8:30 PM Monday, Wednesday and Friday। आज दा मुद्दा Tuesday and Thursday 8:30 PM EST only on channel Just Punjabi। This is Just Broadcasting, and you're watching Just Punjabi। Ladies and gentlemen, welcome back on हैरी के साथ। गल हो रही है जगप्रीत बाजवा जी दे नाल, और जिस तरह कि मैं वादा किया है, ऑफकोर्स सुनीता, अजीत, सिमरन, मनजीत, निक, टैडी किहदा नाम होंदा यार? I don't think your parents like you. Maybe you know, टैडी नहीं तुहाडा नाम हो सकदा। टैडी सीरियसली पंजाबी बंदे ना गर्लफ्रेंड ने क्या होगा? टैडी टुड्डी होएगा। एनीवे, थोड़ी जो रिक्वेस्ट है ये न्यू सॉन्ग ऑफ जगप्रीत बाजवा, सुरमा। हियर इट इज, गो वॉच इट, कम बैक। टैडी ब्यूटीफुल फोटोआं तेरिया कमरे च मैं लाइया, तेरी स्माइल नी पावरफुल नी लोकी देने बधाइयां। ब्यूटीफुल फोटोआं तेरिया कमरे च मैं लाइया, तेरी स्माइल नी पावरफुल नी
लोकी देने बधाइयां हॉलीडे मनाइए ਆਪਾਂ चल चलिए फैन हो गया मैं ते तेरा बनिए ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੂਟ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਲੱਭੀਏ ਰਾਤਾਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ I've been looking at your photos every single day. I wanna fly you out, I love you in every way. So tell me what you're dreaming, thinking about, 'cause I can't wait any longer. दुनिया च तैनू मैं लभदा फिरां हुण तेरे बिना मैं भी नहीं बचदा स्टाइल जिन्ना मर्जी कर लै तू पर सूट ही तेरे उत्ते फबदा सारी उम्र है तेरे ना होण जुदाइयां पासपोर्ट बना लैनी ना दे तू सफाइयां एने भी ना ला बेबी अज लारे लोकी मैनू छेड़ देने सारे तेरे करके हासी दिल हारे रसना ही तेरे नाल सुरमा पा के अखां मिला के दिल दी कह गई तू तेरी यादां देन सजावां किथे हुण रह गई तू सुरमा पा के अखां मिला के दिल दी कह गई तू तेरी यादां देन सजावां हाय किथे हुण रह गई तू so जोड़ी तेरी मेरी सारी दुनिया तो वख बनू सारा जग देखो खड़े खड़ के गली ते मोहल्ले ने भी खुशियां मनाउणी जदों कोड़ी उत्ते जाना अज चढ़ के तेरे नाल अज जगी ने नी परीता पाइयां गिद्धा पा के कुड़ियां ने देखो रौनकां ने लाइयां गले जद करे तो शर्मा के दिल लुटे गल्लां दे टोए दिखा के चले जद तू झांजरा पा के रातां चानणियां सुरमा पा के अखां मिला के दिल दी कह गई देन सजावां किथे हुण रह गई तू सुरमा पा के अखां मिला के दिल दी कह गई तू तेरी यादां देन सजावां हाय किथे हुण रह गई तू Nice. Thank you. Beautiful. Thank you, buddy. Very nice. Thank you so much. ये तो हर दुल्हन अपने एंट्रेंस पे अब यूज करेगी जी जिवें ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ and all that ਅੱਛਾ when I was talking to you you said ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਂਗੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨया ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਲਾਸਿਕਲ ਰੂਪ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ Oh, alagi, you know, it's like you're basically bringing Tupac and Biggie and see, I've not really followed or liked rap, but for a few artists like Eminem, Biggie, Tupac, and after them, it's always been Sidhu, you know, and I've met him, I've interviewed him, he's been at my restaurant club before he passed, and may he rest in peace. Classical जो है डालरा वांगो ना चलता जी ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਲੋ ਬੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਜੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਜੇ ਕੋਈ ਬਲੋ ਬੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਪਣ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਫॉर ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹਾਂਜੀ फिर दृष्टि मिल चुका है फॉर इनोवेशन इन वैनकूवर यू आर द यंगेस्ट रिसिपिएंट फॉर क्वीन एलिजाबेथ II डायमंड जुबली मेडल जी तो डायमंड वैमंड दिता सी क्वीन ने इन्हां को तो चोरी करके लै गई ऑलरेडी कोहिनूर अपने टेंट दे विच पाई फिरदी हुण ओदा मुंडा पाई फिरदा है इट वाज अ ब्यूटीफुल मेडल ब्यूटीफुल मेडल नहीं ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਬਸ ਆਪਾਂ
enjoy it. But congratulations. You know, that's a pride moment. But जब भी ब्रिटिशर्स की गाल आंदी और सानू भी मिले ने अवार्ड, मैं तो कहना होना मैं कोहिनूर निकाल के दे दे, फिर ठीक है. एक होर तोड़ा जो है गाना आंदा पे. अच्छा, ladies and gentlemen, इस गाना जड़ा मैं रिक्वेस्ट करांगा जगप्रीत नू गान तो पहला एक जो है काइंड ऑफ डांडिया गरबा दिल मेरा गुजराती स्टाइल ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਗਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ 100 ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ that is really not you and it is you know but it is you ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਲਾਈਕ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਉਹ am I right sir ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ क्या मैं गुजारिश कर सकता हूँ और अजय वो गाना आया नहीं है क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एक दो लाइना हाँ जी प्लीज इफ यू डोंट माइंड एंड लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज द फर्स्ट टाइम तुसी आ गाना जो है सुनोगे और टोटली डिफरेंट जो भी तुम जगप्रीत के गाने सुने ने दिस इज टोटली डिफरेंट जी प्लीज सर ਰਾਹ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲਿਖਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਤੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਬੋਲ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੇ ਨਾਈਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਡੈਡ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਕਿਉਂ ਅਲੋਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਕਾ ਤੋਂ ਮੋਨ ਹੁੰਨੇ वाह थैंक यू भाई दिस इज अमेजिंग और एक कद प्लान हो रहा है कद रिलीज होता है बस बहुत जल्दी ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੁਰਮਾ ਗਾਣਾ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਬੀਟ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਦੇयर इज ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡਸ ਦੇयर इज ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਣੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ equipment over there ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ See nowadays it's really not about having the best studio state of art studio nowadays like ਹੁਣ artist hotel ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ so like for me it was the same right like I just recorded it at a friend's place studio and ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਕਸ਼ਯਪ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ and he did the music for that so just such a pleasure working with him and you know it turned out very well acha future da ki plan hai do you want to be a singer you want to remain a singer you want to become a composer you want to become a music director ki matlab kuch te khayal hoega na honestly I want to keep my options open obviously primarily being a singer a vocalist but uto alawa like you know being a composer I'd love for other people to sing something I've composed and we'll see you know jad ye line kahi jandi hai na koi artist kehda na कि किसी ने पूछ लो are you in relation no we are just friends I want to keep my options open that means उन्होंने already decide किया है कि बेटा ये करना है so seriously नहीं बिल्कुल honestly like of course you're a singer but would you like if an artist come जिਵੇਂ कनाडा तो कोई आर्टिस्ट आ जाए या अमेरिका च कोई आर्टिस्ट आ जाए कि देखो कनाडा तो काफ़ी आर्टिस्ट यू नो इंडियन जो है मैं देसी कहांगा लंडन चो है ने अमेरिका चो सिर्फ एक कोई आर्टिस्ट अजे तक गया और जो कि मेरा पड़ोसी है जिसका नाम है जी सिद्धू करेक्ट हाँ जी एंड इज अ डॉक्टर हाँ जी बट अगर कोई आर्टिस्ट आके कहता है कि हाँ जी सर मेरे वास्ते कंपोज करो वुड यू हैव अ प्रॉब्लम No, I mean, for me, it kind of depends, right? Like, you know, obviously, if the collaboration fits, all of those things, but I'm not very particular on those things. मैं music enjoy बहुत करता. Like, मैंने एक कभी नहीं होया कि like, oh मैं उन्हें वास्ते compose कर रहे हैं या उन्हें वास्ते, you know, obviously, if the song and if you know people. Can work together and collaborate. I think that's one of the most beautiful things about art. अच्छा वेले टाइम की करते हो? What's your favorite pastime? Watching ice hockey, buddy, and swimming. I love swimming. Canada ਦੇ ਵਿੱਚ swimming ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਤਾਂ indoor ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ. ਨਾਲੇ sauna, steam room, ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਤੇ ਹੋਰ what else do you enjoy? Honestly, I enjoy a lot. I enjoy a lot of traveling.
I love to travel. The favorite khana? You're asking the guy who loves to eat. अगर एक डिश में तो अनुकमा honestly एक डिश choose करो, you know. Honestly, probably sushi, I would say. Nice. Yeah. Very nice. Yeah, I love that. But I honestly I can eat like a lot of things, like pasta, vi sara kuch, like obviously Indian food the must hai. But favorite singer ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ? मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਮगर ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। Because the thing is, the thing with me is मैं ग़ज़लां भी सुनदा, मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी सुनदा, मैं पॉप म्यूजिक भी सुनदा, क्लासिकल भी सुनदा, like चलो मैं I would say if you know, if I had to pick one right now, I would say the person who really inspired and motivated me always, anytime I've listened to him, and he's so therapeutic, is the late Ustad Rashid Khan Sahab. Very nice. Right? But, you know, in terms of nowadays, like, obviously I look up to guys that, you know, koi vadda chota nahi hunda, but jada, you know, obviously Karan Aujla Paji and obviously what Sidhu Moosewala Paji did for our industry, Diljit Paji. There's so many people that have really made Punjabi just such a global phenomenon, really. Yeah, no, I invited Karan Aujla on the show, and hopefully you show up soon. वरना मैं रीमिक्स करके सॉफ्टली दूसरी तरह नाल कर देना. Just kidding. You know, hopefully he shows up soon. अच्छा, जेड़ा वो गुजराती डांडिया स्टाइल गाना है. Oh, जी. Hold on. I have to take a short commercial break. Well, ladies and gentlemen, we will be right back. पैसा है, पैसा. This is Just Broadcasting, and you're watching Just Punjabi. ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕੋ ਨਾਮ, ਪ੍ਰੀਤ ਜੁਐਲਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੈਂਡਮੇਡ ਬਾਈ ਕੈਰਟ ਦੀ ਫਾਈਨ ਜੁਐਲਰੀ, ਐਂਟੀਕ ਅਤੇ ਐਲੀਗੈਂਟ ਡਾਇਮੰਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁਐਲਰਸ, ਓਕ ਟਰੀ ਰੋਡ, ਐਡੀਸਨ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ. Call for more information. 732-379-4929. Preet Jewelers. Transport business the world-renowned company Legend Transportation California Incorporated ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ drivers ਅਤੇ owner operators ਦੀ 401k insurance plan $26 per hour, pay weekly direct deposit. Call or text Paul Bull. Center for Social Changes, facility that takes care of disabled persons, senior citizens. Day-to-day activities available such as computer skills, picnic, gaming, pick and drop facility for senior citizens. ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਹਵੇਲੀ ਕਬਾਬ ਐਂਡ ਗ੍ਰਿਲ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਸਵਾਦੀ ਖਾਣਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ. ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ ਹਵੇਲੀ ਕਬਾਬ ਐਂਡ ਗ੍ਰਿਲ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ. 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਾਜ ਗੁਰਾਇਆ 408 314 6501. ਪੰਜਾਬ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਓਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ. Table, chairs, tent service and decoration all in one spot. For booking and more information, call Raghuveer Singh Kala Gakhal. Guys, got hair loss? I know what you're thinking. Should I shave my head? Comb it over? Wear a hat? Just stop. This isn't 1970. Keep your hair and your confidence because Bosley, America's #1 hair restoration experts, can give you your real hair back permanently. Check them out because they're giving away an absolutely free information kit and a free gift card to everyone who scans this QR code. Dude, you don't have to look like your dad because this isn't your dad's hair loss treatment. People all over the country trust Bosley because they're ahead of the curve. They use the latest technology to give you your real hair back. And the best part, Bosley's permanent solution is protected by the Bosley Guarantee. Let them show you for free how awesome your hair could look with an absolutely free information kit and a gift card for $250 off. Scan the QR code.
Don't wait. Scan the code now and ask about the Bosley Guarantee. ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। This is Just Broadcasting, and you're watching Just Punjabi. Ladies and gentlemen, welcome back. We're talking to Jagpreet Bajwa and Amanpreet Saab. बड़ा मस्त comment तुझे छड़िया है कि he sang for Canucks, but he has a beautiful Canuck in his voice. क्या बात है. I almost read that wrong, but thank you कि तुझे Roman English जो है, yeah. अच्छा, let me ask you this. You know, commercial जब music industry दे में जाओ तो काफी बहुत गंदी politics हुई है। हाँ जी, बहुत गंदी पॉलिटिक्स है क्योंकि I've been there, I've seen it, I've interviewed artists. Did you face problems when you started? When you जब शुरुआत हुई, हर artist ने नाला होता है। Problems face करनी है पईयां सन? I wouldn't say like there's been problems, but I think as a singer, I think on the other side of it though, like ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ finance ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, especially as an independent artist. Right? Because you're battling against record companies, big record companies, right? I think independent artistry jehdi hegi hai hun, it's flourishing like never before, so that's always a good sign. But even with that, like, you know, video de vich tusi invest karo, lyrics de vich tusi invest karo, music arrangement te bahut zyada investment hundi hai, audio, distributing, all of those things, they really add up. And promotion obviously is a huge part of it. So I would say, I mean, those are continuous things that you face, but for me, it's always been about, you know, just putting out more content, because the more content you put out, onna hi vadiya rehta. No, just like, you know, मैं हमेशा कहना हूँ कि social media is a blessing and a curse, depending how you use it. भाई किਵੇਂ ਤੁਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹੋ, अगर बैठ के उत्थे 2-3 घंटे रीलां ही देखते पे हो, फिर कोई फायदा नहीं है। अगर रीलां पांदे पे हो और वो भी मीनिंगफुल होन तो बेहतर है। क्योंकि आज तो 10-12 साल पहला मैं रौला पाना शुरू किया सी, और फिर जो है ने सिंगर्स ਤੁਹਾਡੇ वर्गे और you know others, they started putting out singles. भाई you know क्यों जाइए, क्यों इतना कुछ वेस्ट करिए अपना टाइम और अपना एफर्ट। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ एक गाना जो है डांडिया ਦਾ आंदा ਪਿਆ है, हाँ जी, दिल मेरा, हाँ जी, जो कि डांडिया गरबा काइंड ऑफ। हाँ जी, हाँ जी. Yeah, no, that's coming out very soon. March 20th nu aa raha. March 20th? Wonderful. Yeah, so very soon. Can we request a line? हाँ जी, हाँ जी. Yeah, ladies and gentlemen, आ कदी भी नहीं होया हैगा कि 100 ਵਾਰ जो है तुसी already गाना सुन लिया ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਜੋ March 20th ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, and Jagpreet ji is going to sing for us live. ये कहाँ होता है? सिर्फ यही होता है। It's always my pleasure, भाई. Please. Nice. आया हूँ लेके प्यारे से सपने, तेरे शहर में मैं आ गया। दिल का ये सौदा बन गया तब से, जब से चेहरा तेरा भाग गया। दिल ने जब से माना है मैंने तुम्हें जाना है, तू ही है मेरी सदा। दिल ने जब से माना है मैंने तुम्हें जाना है, तू ही है मेरी सदा। दिलरुबा दिलरुबा
चुरा लिया तूने आज दिल मेरा हो दिल मेरा दिल मेरा चुरा लिया तूने आज दिल मेरा नाइस थैंक यू भाई तो मतलब नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਡੀਆ ਗਰਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਨੱਚਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਗਾਣਗੇ that's what I hope for let me ask you before we sign off and I'm going to sign off with your song and this comes you know ਦਿਲੋਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ you know ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ youngsters ਨੇ I don't know ਕੀ problem ਹੈ but I get emails and I get scared and I try to talk to them as the best as I can. I'm not a psychologist, I'm not a you know very expert on these ਮਗਰ ਜੋ problems ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ youngsters ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ youngsters ਹਾਂਜੀ problems ਨੂੰ face ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ you know ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ problems ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ life usually ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ I don't think life is that complicated. Life, I don't take life very seriously. I take it very easy. It's not that complicated. What is your message to your followers and people who are ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ 12-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ teenagers ਦੇਖਦੇ ਨੇ What do you want to tell them who have a life but they get so scared of small things? I think that's a very good question, Paji. I think the biggest thing I would say is just be yourself. I think sometimes we always cave into a lot of societal pressures or, you know, sanu society loki ki kande ya, you know, in high school especially when we're around certain peers. We're trying to be somebody we're not. And what I would say is just really be yourself, love yourself, because once you start to love yourself and know who you are, you know, obviously as youngsters, you know, when you're going through high school and stuff, and the reason I say this is because this is a journey I had. Right? And, you know, I was talking to back then in high school, I was talking to my counselor, मैं पूछा counselor ਨੂੰ कि like लोकी मैंने avoid बहुत कर देने. And then my counselor said, they might be avoiding you, but have you ever considered that you might also be avoiding them? And that really changed my life, right? And so I would say the same thing to people, just be yourself. Once you do, people will fall in love with that. And the thing is, you know, if you keep sticking to what you're doing, even if people will say, oh, no, it's not going to work, or there's always going to be a lot of the naysayers out there, but just be you, honestly. And before long, things will turn around. Things will, you know, be where you want them to be as long as you keep working hard at it and as long as you keep continuing your passion. That touched my heart, and I'm so proud of you. Thank you. The artist and the persona that you've grown into, and I wish you lots of success. ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ and your beautiful sister, your brother, you know, but God bless you and thank you so much. And ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ which is one of my favorite also, Ganja Wala's song. Ji. Would you mind signing off with that? Of course. Please. यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया प्यार ही प्यार किया प्यार ही प्यार किया प्यार ने सोने ना दिया यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया उसकी चूड़ियों की खनक उसकी वो बिंदिया की चमक उसकी चूड़ियों की खनक उसकी वो बिंदिया की चमक
हाय कजरे की गजबदार ने सोने ना दिया प्यार ही प्यार किया है प्यार ही प्यार किया प्यार ने सोने ना दिया यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया. I love you, kiddo. God bless you. Jiundiro, Vasero. Ladies and gentlemen, this is Harry Malhotra signing off with the great artist Jakpreet Wajwa. Go check out his Instagram, YouTube, and of course the show that is going to be on YouTube, which is live and it's going to be posted again. Thank you. Wonderful. Sat Sri Akal ji. Sat Sri Akal. नचे आप नचावे आपे आके गौंदा मुख देख तेरा सोनिया फरियाद करा मैं इश्क नबी दी तार छे तेनू याद करा मैं मेरा चित्त करे वे तुम बिया तेरी तार बना मैं मैनू लड़े अपने तू ला ले तेरा प्यार बना मैं. This is Just Broadcasting, and you're watching Just Punjabi. जस पंजाबी हक सच अते आवाम दी आवाज़.